This call is now being recorded. Our today's topic is multiple access. It is 11th lecture in the series of data communication and computer network. In this topic, we will cover multiple access resolution concept and few protocols. If you can observe clearly, we have 7 OSI layer. Second layer is data link layer. The data link layer is subdivided into two parts. One is data link control, another is multiple access resolution part, or sometimes it is known as MAC. Okay. So we will take care of the yellow colored portion known as sometimes MAC layer. Okay. MAC layer has different types of protocols, which is also known as multiple access protocols. The first category is random access protocol, where we cover ALOHA, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA. Then we have control access protocol, where there are 3 types: reservation based, calling based, token passing based. Third category is channelization protocol. First is FDMA, second is TDMA, third is CDMA. So today in this class we will cover the first category, random access protocols, where we cover 5 types: ALOHA, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA. So let's define what is random access control protocol. Sometimes random access control protocol is known as contention based protocol. Okay? Means no station is superior to another station and none is assigned the control over another. Okay? No stations permits or does not permit another station to send. At each station, a station that has data to send uses a procedure defined by the protocol to make decision on whether or not to send. Okay? So if you take an example of say 5 students in a class, the whole class is a channel where 5 students can speak. Okay? If random access control method is used to speak, okay, means any student can speak anytime. If you speak randomly, then sometime if no rules is used, then sometime 2 students can talk together, or maybe 5 students can talk together. If such scenario happens, then none will be able to listen the other student voice. Okay? एक कॉमन चैनल में 5 कंप्यूटर एक साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो आपका जो भी डाटा होगा वो करप्ट हो जाएगा। To get a clear data, only one computer should transmit and another should receive. Okay. So random access means randomly any computer can transmit anytime. Okay. So in this random category, the first protocol name is ALOHA. Okay. So it was developed by University of Hawaii in 1970. Okay. So first point you remember, it is random access method or protocol developed by University of Hawaii in 1970. Okay. So it uses a very simple procedure called multiple access. Okay. This ALOHA protocol can be of 2 types, pure ALOHA and slotted ALOHA. Okay. So pure ALOHA, the original ALOHA protocol is known as
your pure ALOHA. Okay, it is very simple but elegant protocol. So what is the idea? Idea is that each station sends a frame whenever it has a frame to send. However, since there is only one channel to share, there is possibility of collision between frames from different stations. Okay? Pure ALOHA dictates that when the timeout period passes and each station waits a random amount of time before resending its frame. Okay, so pure ALOHA, it is rule 1 and it is rule 2. If from this explanation you have not understood anything, let's see this figure. Let's take, you have 4 computers or 4 stations, okay, and say this is your timeline. Okay, this is your timeline as mentioned, it is time. If station 1 is transmitting frame 1.1, okay, then if check it, at that instance of time no one is transmitting, means this will be successful transmission, means frame 1.1 will not collide with any of other frames transmitted by station 2, 3, 4. Okay, but if you observe in the second part, let's see frame 2, frame 2.1, frame 3.1, frame 4.1, means in this time duration, if you will check that all of these packets are colliding. Okay, स्टेशन 1, 2, 3, 4 सबका पैकेट यहाँ पे कोलिशन हो रहा है. Okay, so if all will transmit together, there will be failure. Okay, so it is a success, it's a failure. Same way, another example where frame 2.2 and frame 4.2 are colliding in this duration, means both of the frame will be failed. Frame 3.2 will be successful since no one is transmitting in this duration. So the rules is that simple, जब भी मन चाहा ट्रांसमिट कर दिया. Okay, anytime anyone can transmit. That is pure ALOHA. So pure ALOHA has a disadvantage. So they have optimized this with a concept called slotted ALOHA, where they have fixed durations. Like in the earlier case, if you are sending frame 1 at this slot, only you will submit, only you will transmit. Okay, नया पैकेट किसी को सेंड करना है तो बीच में शुरू नहीं कर सकता. Like this position cannot be used. Like this position cannot be used. Fresh packet can only be transmitted in slot 2. So observe in the figure that frame 2.1, frame 3.1 का starting point is this position only. This position. हाँ, यहाँ पे 2 और 3 कोलिशन हो रहा है, लेकिन पहले से कम कोलिशन हो रहा है. पहले सब ये भी पैकेट डिस्टर्ब होता था. ये पैकेट अगर इधर से शुरू करेगा तो फ्रेम 1 भी खराब होता था. ओके, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल रहेगा, यहाँ पे फेल्यूर रहेगा. स्लॉटेड ALOHA सेज स्लॉट मेक सम स्लॉट. तो यहाँ पे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6 अलग अलग डिवीजन है. जिनको भी ट्रांसमिट करना है वो अपना कोई एक शुरू में ही करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे ये भी फेल्यूर रहेगा क्योंकि 2 पैकेट एक ही स्लॉट में किया है. तो यहाँ पे ये सक्सेस रहेगा, यहाँ पे ये सक्सेस रहेगा. So what is the difference between pure ALOHA and slotted ALOHA? Pure ALOHA does not define any slot, whereas slotted ALOHA defines some slot. That is the difference. Okay.
If you have understood these two concepts, let's see some other notes. So this is the algorithm for pure ALOHA or flowchart you can say, where at start time k at first instance पहले कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, इसलिए k इक्वल टू 0 है, मीन्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट. ओके, पहली बार कर रहा है तो पहली बार है तो सेंड कर दो पैकेट. ओके, फिर थोड़ा वेट करो टाइम, अगर एसी के रिसीव हुआ तो सक्सेस, नहीं हुआ तो फिर से और एक बार ट्राई करो, लेकिन ये ट्राई भी मैक्सिमम 15 टाइम्स हो सकता है. ओके, और एक बार ट्राई करने के लिए कोई एक रैंडम नंबर चूज करके थोड़ा वेट करके फिर ट्रांसमिशन करो. दिस इज द एल्गोरिथम. तो आप देखो, जब भी आप ट्रांसमिट करोगे प्योर अलोहा में, जब भी आपका एक पैकेट का एंड पार्ट किसी और का स्टार्टिंग पे कोलिशन होगा तो ये दोनों पैकेट लॉस हो जाएगा. Okay, so this is your vulnerable time. Okay, in this position, see this also collides. So you can say that starting from my point 0 to this point, that whole part is your vulnerable time, because ये part में आपका कोई भी पैकेट ट्रांसमिट करने से कोलिशन होता है. Pure ALOHA has given a algorithm for calculating throughput. The formula is S equal to G into e to the power minus 2G. Okay, so G का वैल्यू आपका जब हाफ रहेगा तब आपका मैक्सिमम थ्रूपुट जो होगा उसका वैल्यू आपको 0.184 ही मिल सकता है. ओके, बट जब आपका स्लॉटेड एलोहा यूज करते हो उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, जो आपका पहले से S इक्वल टू G इंटू ई माइनस जी है. ओके, पहले था 2G माइनस 2G, तो दिस टाइम इट इज माइनस G इन स्लॉटेड एलोहा. सो सिंस इट इज माइनस G, सो पावर में है तो आपको मैक्सिमम जो भी थ्रूपुट रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका, तो 0.368 मैक्सिमम मिल सकता है. अगर G का वैल्यू आपका 1 होगा तो मैक्सिमम 0.368. दोनों फॉर्मूला में आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोई भी एक कॉन्सेप्ट दिया रहेगा उसमें फॉर्मूला यूज करके आपको थ्रूपुट निकालना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे आपका जैसे S इक्वल टू 0.368 आया तो वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है आपको. ओके, और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मैक्सिमम थ्रूपुट स्लॉटेड एलोहा के लिए कितना है, तो आप लिख सकते हो 0.368. मैक्सिमम थ्रूपुट आपका प्योर एलोहा के लिए कितना है, तो आप लिख सकते हो 0.184. ओके, सो जस्ट नाउ वी हैव कवर्ड स्लॉटेड एलोहा एंड प्योर स्लॉटेड एलोहा. ओके, एक है आपका डिफॉल्ट प्रोटोकॉल और एक है आपका स्लॉटेड एलोहा प्रोटोकॉल. Now, the third protocol name is CSMA, that is Carrier Sense Multiple Access. Okay, before starting this concept, have you understood pure ALOHA and slotted ALOHA? Let me know in the comment. Okay. थर्ड प्रोटोकॉल इज CSMA. जो भी पुराना प्रोटोकॉल है उसमें आपका पहले से कोई कोई डिसीजन नहीं है कि कोई लोग बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस एनी कंप्यूटर इज ट्रांसमिटिंग और नॉट. ओके, थर्ड प्रोटोकॉल जो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. CSMA says that I will transmit, but before transmission I will check, I will sense the channel if any communication is going on or not. Okay, so let's see the definition. CSMA, chance of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it. Okay,
कोलिशन रिड्यूस हो सकता है अगर आप ट्रांसमिट करने से पहले एक बार सेंस कर ले कि कोई और ट्रांसमिशन कर रहा है कि नहीं, मीडियम आइडियल है कि नहीं. Okay? CSMA requires that each station first listen, okay, first listen to the medium before sending. Okay, first listen to the medium, then transmit. So step 1 is listen or sense, second is transmission or sending. Here possibility of collision still exists because of propagation delay. Stations may sense the medium and find it ideal only because the first bit sent to another station has not yet been received. सेकेंड पॉइंट का कहना है कि आपका फिर भी कोलिशन हो सकता है, क्योंकि जब ये सिनेरियो रहेगा, देखिए आप यहाँ पे, लेट्स से B इज ए सेंडर, C इज ए सेंडर, एंड फ्रॉम A's पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज टाइमलाइन एंड D के लिए ये टाइमलाइन है. ओके, सो B स्टार्ट्स एट टाइम T1. B यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन शुरू करता है और C आपका यहाँ पे ट्रांसमिशन शुरू करता है. ओके, इफ T ट्रांसमिट, जो भी उसका पैकेट रहेगा, सोचो कि उसको ये ड्यूरेशन लगता होगा ट्रांसमिशन खत्म करने के लिए. तो फ्रॉम स्टार्टिंग T1 टू से T3 ये टाइम आपका लगता है ट्रांसमिशन फॉर B. B से जब ट्रांसमिट होगा, A को वो पैकेट मिलेगा थोड़ा देर बाद. ये ड्यूरेशन आपका टाइम लगेगा B से A में ट्रेवल होने के लिए. ओके, सो सिमिलरली दिस पॉइंट विल बी फॉर व्हाट, फॉर लिसनिंग पैकेट फ्रॉम B. A के पॉइंट ऑफ व्यू में उसका टाइम आपका फ्रॉम स्टार्टिंग दिस ड्यूरेशन टू दिस ड्यूरेशन लगेगा. ओके, D के पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू ये ड्यूरेशन लगेगा. ये किसके लिए, B का पैकेट को सुनने के लिए, फॉर रिसीविंग पैकेट ऑफ B. दिस इज फॉर रिसीविंग पैकेट ऑफ B. समझ में आया? सिमिलरली फ्रॉम C's पॉइंट ऑफ व्यू, C का टाइम क्या लगेगा, C का टाइम लगेगा, जस्ट यूज अनदर कलर. Let's take this color. Let's take this duration. Okay, this duration is for C. जो C का स्टार्टिंग पॉइंट इधर से इतना तक उसका टाइम लगेगा C को अपना डाटा सेंड करने में. लेकिन वो डाटा, क्योंकि C इज नियरेस्ट टू D, उसको पहले मिल जाएगा. सो पहले मिलेगा तो उसका टाइम लगेगा ये ड्यूरेशन. ये किसके लिए, D के लिए. सिमिलरली C से A बहुत दूर है तो उसको क्या टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा. ये किसके पैकेट है, हाँ यहाँ पे मैंने कुछ गलती बोला, ये C का पैकेट है और ये भी आपका C का पैकेट है. देखो समझ में आया कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज C. सो D को C का पैकेट पहले मिल रहा है और B का बाद में मिल रहा है. बट देखा जाए तो रियल टाइम में B ने पहले ट्रांसमिट किया था. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कौन सा कंप्यूटर, कौन सा नोड किसके नज़दीक है उसको जल्दी मिलता है पैकेट. ओके, फिर फॉर A B का पैकेट उसको जल्दी मिलता है और C का बाद में मिलता है क्योंकि वो दूर में है. okay? इन सच सिनेरियो इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, तो B ने भी तो सेंस किया था कि हाँ फ्री है, उसने भी सेंस किया था हाँ चैनल फ्री है, क्योंकि C को तो इधर भी मालूम चलेगा ना कि पैकेट का कोई और भी मीडिया यूज़ कर रहा है. ये ड्यूरेशन में तो उसको मालूम चलेगा, लेकिन तब तक ये ड्यूरेशन में उसने सेंड कर दिया था. C ऑलरेडी स्टार्टेड सेंडिंग.
in this duration. Okay. So observe that C find at time t2, C find the channel ideal, so it transmit. At time t1, B starts transmission because it finds ideal. So basically ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है उसमें दोनों पैकेट B का भी और C का भी बोथ पैकेट कोलाइड्स. सो बेसिकली ये जो भी कम्युनिकेशन B और C में बाकी के साथ हुआ वो कोई भी काम में नहीं आएगा. ओके, दिस इज नोन एज योर vulnerable टाइम इन केस ऑफ CSMA. ओके, लेकिन कभी कभी ये सक्सेसफुल भी रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत पोल्यूशन डिटेक्ट कर पाएगा. समझ में आया? CSMA समझ में आने से नेक्स्ट दो प्रोटोकॉल समझ में आएगा. ओके, अगर vulnerable टाइम फिर भी समझ में ना आया हो, मैं यहाँ पे आपको सिक्वेंशियली दिखा के बोल सकता हूँ कि आपका रियल टाइम सब कंप्यूटर के लिए आपका ब्लैक कलर जो पोर्शन है, ओके, इट इज vulnerable टाइम क्योंकि वो आपका प्रोपोगेशन टाइम होता है. ओके, व्हेन A transmit, it will be received by B at this time, it will be received by C at this time, and the same packet will be received by D at this time. Okay, so this black colored portion is your vulnerable time. So vulnerable time for CSMA. Okay, that should be remembered. So equal to propagation time. Okay. So CSMA is again three types: one persistent, non-persistent, P-persistent. In one persistent, the rule is after the stations find the channel or line ideal, it sends the frame immediately. Okay, with probability 1. ओके, आपको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है. मींस विथ फुल कॉन्फिडेंस यू ट्रांसमिट. वन परसिस्टेंट CSMA says that if channel is ideal, transmit immediately with probability 1. So this method has the highest chance of pollution because two or more stations may find the line ideal and send their frames immediately. Okay, so यहाँ पे आपका मैक्सिमम पोल्यूशन हो सकता है आपका क्योंकि दो स्टेशंस को आइडियल मिल सकता है. ओके, नॉन परसिस्टेंट सेज a station that has frames to send senses the line ideal. If the line is ideal, it sends immediately. If the line is not ideal, it waits a random amount of time and then sends the channel again. Okay? The non-persistent approach reduces the chance of pollution because it is unlikely that two or more stations will wait the same amount of time and retry to send simultaneously. Okay? Can you observe the difference between one persistent CSMA and it is also CSMA? It is also CSMA. Okay. Please remember that both are CSMA. In one persistent, if the line is ideal, send frame immediately with probability 1. और अगर आइडियल नहीं मिला, कोई रूल नहीं है. ओके, कोई रूल अगर नहीं है इसका मतलब सब जो भी कंप्यूटर होगा वो इक्वल टाइम वेट करेगा, फिर से सेंस करके फ्री मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी 1 के साथ इमीडिएटली ट्रांसमिट करो. सो दिस इज वन परसिस्टेंट CSMA. इन द सेकेंड टाइप, नॉन परसिस्टेंट सेज इफ द चैनल इज फ्री सेंड इमीडिएटली. ये तो दोनों सेम है. अगर
इमीडिएट सॉरी अगर आइडियल नहीं है, wait a random amount of time, then sends the channel again. If in the second time it finds the channel ideal, send immediately. If again it finds busy, then wait a random amount of time. If this protocol will be used, then चांसेस कम है कि नोड 1 और नोड 2 एक ही टाइम चूज करेगा वेटिंग टाइम। कोई नोड 5 सेकेंड वेट कर सकता है, कोई 8 सेकेंड भी वेट कर सकता है। सो इसमें क्या होगा, थोड़ा चांसेस ज़्यादा हो जाएगा कि कोलिशन कम रहे, कोलिशन कम हो। ओके, थर्ड कैटेगरी ऑफ पी परसिस्टेंट, दैट इज CSMA category, third. In third category, known as P persistent, it says combine the advantage of one persistent and non-persistent. Okay? It reduces the chances of collisions and improve efficiency. In this method, after the stations find the line or channel ideal, it follows the following step. Okay? पहले दो केस में आइडियल होने से तुरंत भेज दो, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट में तुरंत भेजना नहीं है। ओके, क्या करना है, विथ प्रोबेबिलिटी पी ट्रांसमिट फ्रेम। ओके, इफ आइडियल वन प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांसमिट मत करो। पी प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, आपका 1 से कम कोई वैल्यू में प्रोबेबिलिटी चूज करके फिर ट्रांसमिट करो, और जो भी उल्टा रहेगा 1 माइनस पी, दैट इज विल बी क्यू। विथ प्रोबेबिलिटी क्यू, stations wait for the beginning of the next time slot and check the line again. Okay? If the line is ideal, it goes to step 1. If the line is busy, it acts as a collision has happened and uses backup procedure. Okay, let me revise it again. P persistent says that sense the channel. If the channel is ideal, choose probability P to transmit frame and choose probability Q, which will be 1 minus P, for the station to wait for the beginning of the next time slot. Okay, and check the line again. सेकेंड टाइम में जब भी वो ट्रांसमिट करेगा तो 1 माइनस पी टाइम वेट करेगा, क्योंकि उसका सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का जो उल्टा वैल्यू रहेगा 1 माइनस पी, वो टाइम होगा उसका वेटिंग टाइम नेक्स्ट साइकिल के लिए। सेकेंड साइकिल में आइडियल रहेगा तो फिर से स्टेप 1 में जाओ, बिजी रहेगा तो मतलब कोलिशन ओकर्ड, तब आपका बैकअप प्रोसीड्यूर ट्राई करना है। ओके, so till now I have covered ALOHA. There are two categories, pure ALOHA, slotted ALOHA. Then I have covered CSMA. In that, three categories are covered: one persistent, non-persistent, P persistent. The second last category is CSMA CD. Means whatever you have understood in CSMA, that will be same. With that, another facility, another features will be used, that is collision detection. So the short form is CSMA/CD, which is known as carrier sense multiple access with collision detection. This algorithm is used to handle the collision where station monitor the medium. Stations monitor the medium after it sends a frame, okay, to see if transmission was successful or not. If so, station is finished. If however there is a collision, the frame is sent again. Okay, see the advantages of CSMA CD कि आपका collision होने से फिर से रिट्रांसमिट करना है, जो ये फैसिलिटी पहले कोई और प्रोटोकॉल ने
यूज नहीं किया था। ओके, जो भी प्रोटोकॉल जस्ट पहले पढ़ाया था CSMA, उसमें ट्रैकिंग नहीं रहता था। पैकेट सेंड कर दिया, इसके बाद मुझे मालूम नहीं, लेकिन CSMA CD कीप्स ट्रैक ऑफ द ट्रांसमिटेड पैकेट। ओके, इफ it founds any collision, frame is to be resent again. So CSMA CD gives a facility of transmitting the packet again. Okay. So what is the idea of CSMA CD? Basic idea behind CSMA CD is that the stations need not be avoid receiving while transmitting to detect a collision. Okay. Let me repeat again. Stations need not be avoid receiving while transmitting to detect a collision. While there is no collision, stations receives one signal, its own signal. While there is a collision, the stations receive two signals, its own signal and signal transmitted by the second station. To distinguish between these two cases, receive signal in these two cases must be significantly different. Okay, just a minute. Okay, to distinguish between these two cases, received signal in these two cases must be significantly different. Okay, कुछ समझ में ना आया हो तो फिर से सुन लो। CSA में उसका जो ट्रांसीवर रिसीवर रहेगा, कंप्यूटर सोचो कि नोड 1 है और एक नोड 2 है। Each computer has transmission and reception capacity. If it is transmitting, it also keeps track of what it is transmitting by listening its own signal. तो आप अगर ट्रांसमिट कर रहे हो, आप अगर बात कर रहे हो, तो आपका खुद का वॉइस तो खुद को अपने कान में सुनाई देगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे कि वन कंप्यूटर एक्ट एज ए लाइक यूज एज ए कंप्यूटर एज ए ह्यूमन बीइंग, जिसका आपका बात करने के लिए मुंह है और सुनने के लिए कान है। तो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। सो आप जब बात कर रहे हो, कोई अगर बात नहीं कर रहा है मीन्स आपका खुद का वॉइस आपको खुद को सुनाई देगा। कोई और भी बात कर रहा है मीन्स आपको आपका कान में दो सुनाई देगा, आपका खुद का वॉइस और एक का वॉइस, सेकंड पर्सन का वॉइस। ओके, सो that is the mechanism used by CSMA CD. Okay, if no collision, own voice will be listened. If collision, two signal will be listened. One its own signal, second is the second station signal. Okay? There is the two cases. That is all about CSMA CD. CSMA CD में जब भी सोचो कि यहाँ पे आपका say for A, first bit of A and this is the first bit of C. Okay, so at this position collision occur. Okay, so C will detect collision at this point and it will abort its transmission. Okay, A will detect collision in this point and it will abort its transmission. Okay, so at least after this duration T4 चैनल आइडियल हो जाएगा, क्योंकि वो एबॉर्ट कर देगा तो चैनल फ्री हो जाएगा। आप जब सुनोगे कि कोई और का बात भी सुनाई दे रहा है, आप चुप हो जाओ, तो वो मीडियम, वो रूम में किसी और का वॉइस अगर कंटिन्यू हो रहा है तो वो ही सुनाई देगा, आपका वॉइस चुप हो जाएगा आप। तो you are aborting, you have detected and you are aborting. Okay, so that is the mechanism. So समझ में नहीं आया तो ये एक बार देख लीजिएगा जो फ्लो डायग्राम है। लास्ट प्रोटोकॉल इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और उसके साथ कोलिशन अवॉइडेंस। पहले का था कोलिशन डिटेक्शन, मीन्स आपने ट्रांसमिट कर दिया,
तब जाके अगर कोई डिटेक्शन करते हैं तो आप अबॉर्ट करो। और ये जो CSMA CA का फैसिलिटी है उसमें क्या है कि पहले से कोलिशन से पहले आप डिटेक्ट कर लो कि कोलिशन होने वाला है। सो हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना एडवांटेज है, लेकिन CSMA CA में ये फैसिलिटी है कि बिफोर कोलिशन आप अवॉइड करो उसको, कोलिशन होने के बाद नहीं सोचना है, कोलिशन से पहले ही आप कोई स्टेप ले लो, ठीक है। So to avoid collision on wireless network, carrier sense multiple access with collision avoidance was invented. Okay, collisions are avoided through the use of three mechanisms. First is interframe spacing. Okay, interframe spacing आपको ऑलरेडी कोई एक स्लाइड में पढ़ाया गया था जिसमें आपका SIFS ओके ऐसा था, फिर DIFS, दो फ्रेम के बीच में आपका फ्रेम 1 और फ्रेम 2 के बीच में आपका एक स्पेस था, ओके, दैट इज इंटरफ्रेम स्पेसिंग। फिर आप यूज़ कर सकते हो कॉन्डिनेशन विंडो, जैसे विंडो साइज 4, 8, 16, तो अगर कोलिशन होता है तो 16 से कम होके आप 12 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, ओके, कॉन्डिनेशन विंडो। देन इज एक्नॉलेजमेंट, जब भी आपका पैकेट ट्रांसमिशन सक्सेसफुल रहेगा उसके लिए आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करो, ओके। So these are the three mechanisms to be used by CSMA CA. Please remember these three mechanisms. Now let's see in CSMA CA, if stations find the channel busy, it does not restart the timer of the condition window. It stops the timer and restart it when the channel become ideal. क्या हो रहा है यहाँ पे? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिशन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, जब आपका चैनल को बिजी मिलता है, व्हेन इट फाइंड्स चैनल बिजी, उसका जो टाइमर है ट्रांसमिशन का टाइमर उसको फिर से रिस्टार्ट नहीं करता है, कंडीशन विंडो इंक्रीज नहीं करता है या फिर से उसको रेडी नहीं करता है। इट स्टॉप द टाइमर और एंड रिस्टार्ट इट व्हेन द चैनल बिकम आइडियल। जब आपका आइडियल मिलेगा तभी टाइमर ऑन करेगा, टाइमर ऑन करने के बाद ही पैकेट ट्रांसमिशन शुरू होगा, ओके। इन CSMA CA, इंटरफ्रेम स्पेसिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ स्टेशंस ऑफ ए फ्रेम। अगर 5 कंप्यूटर है तो इंटरफ्रेम स्पेसिंग यूज करके किसी का कम, किसी का और ज़्यादा IFS, किसी का ज़्यादा IFS यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिसका IFS कम रहेगा, जिसका इंटरफ्रेम स्पेसिंग कम रहेगा, वो जल्दी आपका टाइमर ऑन कर सकता है, तो वो जल्दी ट्रांसमिट करेगा। ऐसा करके आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, ओके। सो these slides are skipped because the same thing just I have said that priority of stations और फ्रेम हो सकता है आपका IFS यूज करके। फिर CSMA CA में stations find the channel busy, it does not restart the timer or condition window, it stop the timer, restart the channel become ideal, okay. So what we have covered today, ALOHA, इसमें 2 कैटेगरी था, CSMA 3 कैटेगरी था, कोलिशन CSMA कोलिशन डिटेक्शन, CSMA कोलिशन अवॉइडेंस, ओके। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे 2, 3, 1, 1, okay. So 7 protocols are covered today and we'll stop here today. If you have any question, you can ask me in the chat or through the voice.